All right, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Let's start our session today. So, from your wiki, I understand that not all of you have created your group pages. So, please do that as soon as possible because we have to start with our group presentations very soon. So with this reminder, let me come back to the topic that we were discussing in the previous class. In the previous class, we started the topic of social network analysis. So social network analysis is a branch of study in which we study networks and their properties. And in the previous section, previous class, we looked at some of those properties. And one of the key properties that we are interested in knowing the importance of individual nodes within the network. So we want to calculate the importance based on the network perspective. So the things that we can calculate is how many links join a particular node, and we can also see we can calculate things like the shortest distance between two nodes, etc., etc. That gives us some idea about their importance. So today we'll continue with that, and I would like you to uh, do a little bit of practice also of those calculations because these are the type of calculations that will come in your exam also. So let me go back to my slides. तो इसमें आपने ये देखा था कि okay, so what do we study when we talk about networks or network analysis? We talk about, we look at the network as a whole to see how big this network is and how strong this network is. By a strong network, I mean a network that is not easy to break. It means that uh, the paths of communication in that network remain intact, even if we disrupt some of these edges or we take out some of the nodes from the network. So for example, if we take out one node and it doesn't make any difference on the working of the entire network, then we say that it's a bit resilient. We can keep on doing that. We can keep on taking out nodes, and eventually that network will no longer be there. It will split into two networks, right? So we have to, uh, this sort of gives us an idea about the strength or resilience of the network, right? And it also gives us an idea about the importance of certain nodes, because there are certain nodes that if we take them out, then that affects the entire network, right? So they are somehow important for the existence of network, or maybe a small group of nodes that is important for keeping the network together. And if you take out that group, then the whole network splits into a number of smaller networks. So these are the type of things we can study to give us an idea about the network itself. So when we talk about the importance of nodes, one way of finding that out is to calculate their uh, centrality, right? And we saw that there are 3 or 4 types of centrality. We can maybe even come up with our own measure or own formula for calculating the importance of a certain node. And we can do the same for the edges as well. And we can also talk about pairs or small groups. So instead of looking at the importance of a single node, we can probably look at the importance of a small group of nodes within that network, or a small set of edges or a pair of edges within that network. So the simplest one is the degree centrality. It simply measures the number of edges that connect a node to the network. And we also distinguish between 2 types of degree centrality. If the
network is a directed network, which means if the arrows are only in one direction and not in both directions. As the figure that you see on your screen is a symmetric network, or the edges are bidirectional. So in this case, there's only one measure of degree centrality, is the number of arrows pointing to a particular node. For example, the node Y over here, the degree would be 3. But if the nodes are directed, then we have two types of degree centrality: the in degree and the out degree. So the in degree counts the number of edges that are flowing into a node. For example, in the node C over here, if you see, the in degree is 0 because there's no arrow pointing towards C, and there's only one arrow pointing away from C. That's why the out degree is 1. All right, and then closeness centrality, that was another measure, and we saw that we can find that out by calculating the length of path from that node to all the other nodes, and then finding the average distance. For example, in this diagram that you see, if you look at this circle over here in the center, this, let me call it A, right? If you look at this node A and calculate its distance to all other nodes, for example, the green node is just one edge away, and this pale yellow is also 1, and this dark blue is also 1, and its aqua color is also 1, and this kind of bluish is also 1, and this purple is also 1. But the yellow is 2 nodes away, right? So if you want to reach yellow from node A, the shortest distance will be either through this green one, let me call this as X, or this blue one, let me call this as Y. So it will be 2 edges, at least 2 edges. So I'll have to either go through X to yellow or go through Y to yellow, and the path over here is 2, right? So all the nodes over here in this cluster, there are one unit away or 1 edge away. But the yellow one is 2 edges away, and you can see that this brownish node over here, that's called this Z, is 3 edges away. So we can then calculate the average distance. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and to 6 you add 2, which is 8, and then you add 3, which is 11, and then you divide by the number of nodes that are in the network altogether, right? You divide it by that, and you get the closeness centrality, which is the average distance. So you can see that A will be considered as close to the network as compared to Z, which will be considered far away, because the distance of Z from all the other nodes will be more than 1 in most of the cases, and when we average it out, it will also be a high average, right? So that was an easy one, and we take the inverse of the average, because when the average is high, the inverse is low. It means the closeness is small. It's not close, it's far, right? But if the average is small, which means that it is close to all the networks, therefore inverse would be high. It means the centrality would be high. Closeness centrality would be higher because the average distance is small. So not very difficult to grasp this. But you can also notice that although they are very simple and in concepts to grasp and very intuitive ones,
but the amount of calculations that you may need to perform for calculating this centrality, that might be high depending on, let's say, how many nodes there are in the network that you're looking at. And these example networks that we are seeing, they have just 6 or 7 nodes. But in real life, obviously, if you look at, for example, your own social network, there might be hundreds or thousands, even thousands of nodes in your own social network. And when we talk about even bigger social networks, and we can even apply the same concepts on computer networks, right? The concept of centrality, which will tell us how important this particular station is, or this particular computer is in the network. And over there, the number of nodes can be very high. So it is definitely, the calculations are simple, but there are many of them. So this is an example for calculating closeness centrality, and you can see that all we have done is taken the average distance of that node. For example, the node A, right? Its average distance from all other nodes is calculated by looking at its distances to B, C, and D, and E. I think in the last class, I mentioned that this E is probably wrong. It's also 2 over here because we were not taking into consideration this edge. That if we remove this edge, then the distance becomes 3, because we have to go to B and then D and then E, or go through C and D and E. In that case, the distance, shortest distance would be 3 in that case. And you'll also note that there are 2 shortest paths. If I remove this edge over here, B to E edge, then the 2 shortest paths are like this or like this, right? There are 2. And then I calculate the average and then takes its reciprocal, and that will give me the closest centrality. And we can calculate this for all other nodes as well. So you can see the F node has a high average and a low centrality, whereas, for example, the node D has a small average but a high closest centrality. Betweenness centrality is also easy to check, right? It is the fraction of paths, the shortest paths that pass through this particular network, this particular node. For example, if I'm interested in finding out the betweenness of this red node over here, the first thing I need to do is find all the shortest paths in the network. When I say all the shortest path in the network, it means all the shortest path between all the nodes, right? So I take every pair of nodes and find out what is the shortest distance between these two. For example, I can take, let's call this as A and this call as B. So what is the shortest path between A and B? And how many shortest paths are there between A and B? So the answer is 1, right? There's only one path over here. Then I can find out the shortest distance between, let's say this is node D over here, and this is E over here, and so on and so forth. So the shortest paths between A and E is just one shortest path over here, or between A and E. And so I'll list that down. So I will take all the nodes, all the pair of nodes. I'll form all pairs. For example, AB is one pair, AC would be another, AD another, and until the last pair. And then I'll take the B node and form its pairs with all the other nodes. And for each pair, I'll find out how many
shortest paths are there between these two nodes. Now, in the diagram that you're seeing, there is only one shortest path between every node. But this can change if the network is a bit more complex. For example, if there's an edge over here, and let me call this green node as X, then there will be two shortest paths between D and X. One is through E, and the another one is through this one. Let's call this F, right? So there are two shortest paths over here between them, right? And similarly, if there were more edges, we can end up in a situation where we have more than one shortest path between the two nodes. In that case, we find out on how many shortest paths go through the node we are interested in. I mean, we want to calculate its betweenness centrality, right? So looking at the formula to make it more clear, this 2 sigma simply means that for all nodes I and j, right? So we are talking about a pair of nodes. So we have to construct the list of all the pairs where I is not equal to j, right? This will give us a list of all the pairs. For example, if there are just 3 nodes in a network, then I'll have these pairs. I'll have AB, AC, and BC, right? So there will be only three pairs over here, where the first node is different from the second node. If I add another node over here, then I have one more pair over here, AD, and I will also have one more pair over here, which will be BD, and I'll have one more pair over here, CD, right? So I'll add three more nodes over here. And similarly, if I add one more node over here, let's say E, then I'll have AE, another pair, BE, another pair, and CE also another pair, and then I'll have one more called D and E, right? So the number of pair similarly grows. So these 2 sigmas show that we have to calculate from every node to every other node. Now, what is this small g over here? This stands for the shortest path, right? Shortest path between I and j. This over here, gij, means the shortest path between I and j. And this over here, gikj, means the shortest path between I and j that goes through k, right? Which k is different from both I and j. For example, if these are connected like this, A is connected to B and A is connected to D and C and E, right? So in this case, if I'm interested in knowing how many shortest paths are there between A and E, right? So I have 2 shortest paths between A and E. The first shortest path is A, B, C, and E, and the second shortest path is A, D, C, and E, right? So if I'm interested in finding out the betweenness centrality of, let's say, C over here, I'll first have to list down all the shortest paths between all the nodes. So there's only one shortest path between A and B. So I'll just write it as 1.
Between A and C, there are two shortest paths. Between A and D, there is just one shortest path. And between A and E, there are two shortest paths, right? And I'm interested in finding out the betweenness centrality of C, right? So I will calculate how many paths are shortest paths are there on which go through C. So C does not lie on A and B, so this is a 0 over here. I will ignore this one over here because I'm calculating the centrality of C. So it has to be other than these I, J have to be other than K. So since C is the middle node over here, that's why I'll just ignore it over here for the time being. So I'll go to the next shortest path between A and D, and C does not lie on it. And there are two shortest paths between A and E, and C lies on both of them, right? So how do I calculate the betweenness centrality of C? I first calculate the total number of shortest path, this sigma at the top over here, this one, and this one over here, Gij. This is the sum of all the shortest paths over here in the denominator. So just take the sum over here. This is 1 and 1, 2, and 2 and 2 is 4. So denominator पे मेरे पास 4 आ जाएगा. और कौन से कितने पास हैं जिनमें k lie करता है, ठीक है, उसके भाई हम सम करेंगे. तो 0 plus 0 plus 2 is 2 over here. ठीक है, तो दो ऐसे shortest path हैं जिसपे c lie करता है, जबकि 4 ऑल टुगेदर शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं इस नेटवर्क में, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट हैंड साइड. इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं बिटवीन एनी टू पेयर, वो हमारे पास 4 थे. जी सदान, आपने आई थिंक सही हाथ उठाया बिकॉज I have not taken into consideration all of the paths. Is that why you have raised hand? Yes, sir. Sir, I was asking why did you ignore AC, the shortest path for AC? देखिए AC का तो आंसर सिंपल है इग्नोर करने का, क्योंकि ये यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है वो ये कह रहा है कि I and J should be different from K. So K in this case is C, जो हम अभी एग्जांपल देख रहे थे उसमें जो हम जिस नोड की हम बिटवीननेस निकाल रहे थे वो C था, इसलिए हम C को इग्नोर करेंगे. हमने बाकी सारे I और J देखे, ठीक है. यहाँ पे let me show you these calculations once more time because ये मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया है. Let me fix this mistake and come back. Okay, let me go back to my slideshow on कर देता हूँ. Alright, तो हमारे पास जो हमने नेटवर्क बनाया था वो था A, B, C, D और E, और वो इससे से कनेक्टेड था, ठीक है. और हमने C की बिटवीननेस कैलकुलेट करनी थी, ठीक है. तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे, ये जो बॉटम में यहाँ है. G stands for shortest path between all the nodes, ठीक है, all the pairs. तो पहले तो हम पेयर लिख लेते हैं सारे, ठीक है. A B एक पेयर है, एक C पेयर है, A D एक है, और A और E एक है, और फिर B से जब हम शुरू करें तो B C है, B D है और B E है, और जब हम C से शुरू करेंगे तो C D आएगा हमारे पास और C E आएगा, और फिर जब हम D से शुरू करेंगे तो D E आएगा, ठीक है. तो A और B के बिटवीन कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं, सिर्फ एक है, वो हमें नजर आ रहा है डायग्राम से. A और C के दरमियान कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं, वो 2 हैं, वो हमें नजर आ रहे हैं, एक थ्रू B और एक थ्रू D. A और D के दरमियान भी हमारे पास जो है एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है. A और E के दरमियान अगेन हमारे पास 2 शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं. B और C के दरमियान हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ है. B और D के दरमियान हमारे पास 2 शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बिटवीन B एंड D. ये टॉप से या तो A के थ्रू जाएंगे हम या फिर C के थ्रू जाएंगे. B और E के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सिर्फ एक है.
सी और डी का भी बिटवीन एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है, सी और ई के दरम्यान में भी एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है, और डी और ई के दरम्यान भी एक ही शॉर्टेस्ट। फिर बी और ई के वन क्यों होगा? सॉरी, बिटवीन बी एंड ई वांटेड टू टू शॉर्टेस्ट पाथ। बी और ई के दरम्यान, बी और ई के दरम्यान एक ही है क्योंकि सी के थ्रू जा रहे हैं, और तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है उनके दरम्यान। तो बी टू सी सी टू ई करके नहीं होगा? जी बी टू सी एंड देन सी टू ई। नहीं, हमने शॉर्टेस्ट पाथ के का साइज नहीं हम देख रहे, हम देख रहे हैं हाउ मेनी शॉर्टेस्ट पाथ्स आर देयर, यानी ये कितने ऑप्शंस, कितने हमें ऑल्टरनेटिव्स कितने हमारे पास। शॉर्टेस्ट रास्ते का समटाइम्स दो होते हैं ना, तो ये जो 1 और 2 लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, ये इट्स नॉट द साइज ऑफ द पाथ कि हाउ मेनी एजेस हमने क्रॉस करनी है, ये है कि कितने हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए से बी में जाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है। देखिए अभी हमने जैसे लिखा हुआ है ए और ई के दरमियान हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। ए से ई में जाने के लिए या तो हम थ्रू बी जा सकते हैं, ठीक है। ए से ई में जाने के लिए एक रास्ता तो हमारे पास ये है, दिस इज वन रास्ता, और ये दूसरा रास्ता है। साइज दोनों का 3 है, लेकिन दो रास्ते हैं हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ पे दो लिखा है क्योंकि दो रास्ते हैं। अगर हमारे पास एक और एज होती, फॉर एग्जांपल बी से ई में डायरेक्ट कनेक्ट कर दी होती, तब हमारे पास ये जो है 2 के बजाय ये 1 आ जाता, क्योंकि फिर हमारे पास एक ही शॉर्टेस्ट पाथ होता बिटवीन ए एंड ई, ठीक है, विच गोज थ्रू बी। अगर हम किसी और तरीके से जाते तो वो हमारा फिर जो है इंक्रीज हो जाता। मिसाल के तौर पे अगर ए से हम डी पे जाते, फिर सी पे आते, फिर ई पे आते, तो हमें लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ता। जो शॉर्टेस्ट है वो दैट इज गोइंग थ्रू बी। तो अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसका जो सम है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द शॉर्टेस्ट पाथ, ये सम करके मुझे बताएं कितना आ रहा है। 13 13 यस सर। 13। अच्छा, ये अब 13 ये फिक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। हम किसी भी के की बात करें, ये 13 फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि इट इज द सम ऑफ all the options that we have, all the shortest paths that we have. अच्छा, अब हमने बिटवीननेस निकालनी है इसकी सी की, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे, ये जो है ये सी है हमारा, के जो है। अब हमने सारे ऐसे पाथ्स देखने हैं जिसमें हम सी को जो है हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट बिटवीन all the shortest paths between in the network where k is not involved. तो इसका मतलब है कि हमें जो अब पेयर्स पे कैलकुलेशन करनी है वो ये वाला है, ए और बी वाला है, ए और डी वाला है, ए और ई वाला है, बी डी वाला है, बी ई वाला है, और डी ई वाला है। जहां जहां पे भी सी आ रहा है उसको हमने इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है, वो कह रही है कि ये तीनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि ये जे बी सी हो या आई सी हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम ये चीजें इग्नोर कर देंगे। तो अब मुझे ये बताएं, ये जो ग्रीन वाले जो टिक्स हैं इनका सम क्या है? सेवन। 7। गौर से फिर दोबारा से सम करें। सर 8 है। 8 है, ठीक है, 8 है। राइट, 8 है ये, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये आखिर में 8, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि इन रास्तों पे सी लाई करता है या नहीं करता। शॉर्टेस्ट जो पाथ है बिटवीन ए एंड बी, इस पे सी लाई करता है या नहीं करता। हमारा आंसर है नहीं करता, तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। ए और डी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस पर सी लाई करता है,
नहीं लाया करता, ठीक है। ए और ई के दरमियान दो जो शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं दो, उन पे सी लाया करता है। आंसर है यस, वो दोनों पे लाया करता है। बी और डी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं वो दो हैं हमारे पास, उनमें से सी वन पे लाया करता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको कि वन पे क्यों लाया करता है? Yes or सर no? आपने स्पेसिफिकली वाली नोट्स को चूज किया? जी, आपने स्पेसिफिकली वाली नोट्स को चूज किया, मतलब ए बी ए डी ए बी डी और बी? जोर से कहिए, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। सर मैं बोला आपने स्पेसिफिकली वाली नोट्स को चूज किया, मतलब ए बी ए डी ए बी डी और बी। जी, साधारण आप बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन का क्या आंसर है? सॉरी सर, मुझे सही से समझ नहीं आया इन्होंने क्या पूछा, कैन यू प्लीज रिपीट? सर ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक नोट्स जो आपने किस तरह चूज किए हैं, ग्रीन वाले? ग्रीन वाले नोट सिर्फ इससे चूज किए हैं क्योंकि हम अभी इस वक्त जो है ना नोट सी की सेंट्रलिटी निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं इस वक्त, राइट नाउ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द बिटवीननेस सेंट्रलिटी ऑफ नोट सी, इसलिए हम वो सारे पाथ्स इग्नोर कर देंगे जिसके एजिस पे सी आता है, या शुरू में या एंड में, ठीक है। तो ए सी के जो एंड में सी आ रहा है इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, बी सी के भी एंड में सी आ रहा है इसको इग्नोर कर दिया, फिर सी डी के शुरू में आ रहा है इसलिए इग्नोर किया, और सी के भी शुरू में आ रहा है इसलिए भी इग्नोर किया। बाकी जो हैं जो नोड्स हैं जो शुरू या ख़त्म नहीं होते सी पे, उनको हमने कंसिडर किया, दीज आर द ग्रीन टिक्स वंस, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रीन टिक वाले पे हमने ये देखते हैं कि इस शॉर्टेस्ट पाथ पे सी लाई करता है या नहीं। तो ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस पर सी लाई नहीं करता, इसलिए हमने उसको 0 कर दिया। ए और डी के दरमियान जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है उस पर सी लाई नहीं करता, इसलिए हमने उसको भी 0 कर दिया। ए और ई के दरमियान दो शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं और दोनों पे सी लाई करता है, ठीक है। चाहे आप ए बी और सी ई का रास्ता इख्तियार करें या ए डी सी ई का रास्ता इख्तियार करें, दोनों में आपको सी के थ्रू जाना पड़ेगा ई तक पहुंचने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीन में भी 2 लिख दिया इसके आगे। बी और डी के दरमियान दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम ए के थ्रू पहुंच सकते हैं डी पे, या हम सी के थ्रू पहुंच सकते हैं डी पे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन पे सी लाई करता है, दूसरे पे सी लाई नहीं करता है। दैट्स व्हाई हमने 1 लिख दिया ग्रीन में इन फ्रंट ऑफ द रेड 2। बी और ई के दरमियान जो है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और उस पर सी लाई करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। और जो लास्ट वाला है ये ग्रीन में है, ठीक है। और डी और ई के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस पर भी सी लाई करता है। तो अब ग्रीन नंबर्स का सम क्या हुआ, ये 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये अब हम 5 लिख देंगे। तो ये जो है ये सी की जो बिटवीननेस सेंट्रलिटी है वो 5/8 हमने कैलकुलेट किया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ऑलराइट, तो अब एक्सरसाइज के तौर पे आप सब लोगों ने क्या करना है कि एक रैंडम नेटवर्क बनाना है जिसके अंदर 7 नोड्स हो, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। और आपने रैंडमली ड्रॉ करना है, अपने कंप्यूटर पे ड्रॉ करें किसी भी तरीके से, ठीक है। और उसको उसके अंदर रैंडमली एजेस निकालें, ठीक है। और फिर उसकी मुझे जो है कैलकुलेट करके बताएं बिटवीननेस सेंट्रलिटी और क्लोजनेस सेंट्रलिटी ऑफ एनी 2 नोड्स इन योर नेटवर्क, ठीक है। ये आपको मैं भी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, 10 मिनट में आपने खत्म करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप स्टार्ट करें या पेपर पे ड्रॉ करें या कुछ भी करें। You have 10 minutes to draw a random network of 7 nodes, A से लेके G तक,
और उनके अंदर रैंडम एजेस कनेक्ट करें और फिर उनमें से कोई से 2 रैंडम नोड्स जो है सिलेक्ट करें और उनकी मुझे क्लोजनेस सेंट्रलिटी और बिटवीननेस सेंट्रलिटी कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, फिर मैं आपको आपको कॉल करूंगा और जिसका नाम कॉल होगा उसने अपना जो है ये एक्सरसाइज डिस्प्ले करनी होगी क्लास को सारे अपना स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, सर अभी जो हमने किया वो बिटवीन सेंट्रलिटी है ना? अभी जो हमने किया वो बिटवीननेस सेंट्रलिटी। ठीक है, तो अभी आपके पास 10 मिनट्स हैं ये एक नेटवर्क ड्रॉ करने का। रैंडमली ड्रॉ करें एक नेटवर्क 7 नोड्स का और उनमें से फिर 2 नोड्स की आपने दोनों सेंट्रलिटीज कैलकुलेट करनी है, बिटवीननेस और क्लोजनेस सेंट्रलिटी। ठीक है, तो अभी 10 मिनट बाद में आपके पास आऊंगा एंड आई स्टार्ट कॉलिंग योर नेम्स और फिर हम देखेंगे कि आपने क्या किया। Sir, can you please repeat what we have to do for the 2 nodes that we select? What do we have to calculate? You have to calculate their centrality. So we have discussed 3 types of centrality, and you have to calculate betweenness centrality and also closeness centrality. All right, so the time is up. The first thing you need to do now is to tell me if you would like to share your work with the class. Please raise your hands if you want to share your work. Sir, I have calculated the centrality of C in आप my graph. शेयर कर सकते हैं आप अपना काम? Yeah, sure. इसको एक्सप्लेन भी करें जरा क्या किया आपने। Sir, this is my network. और सर ये मैंने इसके सेंट्रलिटी ऑफ सी फाइंड करनी है, तो सर मैंने इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जिसमें सी पहले या आखिर में ना आता हो, कहीं मिड में आता हो। और सर जो फर्स्ट वाला है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब किसी भी नेटवर्क का ए टू बी जिसमें ना सी सेंटर में आता है, शुरू या एंड में नहीं आता, तो ये सर इनका शॉर्टेस्ट पाथ है। सर ये ए टू बी, ए टू डी, ए टू ई, ए टू एफ, बी डी, बी ई, ये सारे। और सर द सेकंड वन इज सर इसकी जो वैल्यू है जिसमें सी कम्स इनटू द पाथ आर नॉट, तो सर मतलब ए टू बी में सी सेंटर में नहीं आता, डायरेक्ट हो सकता है, तो इसका 0 होगा। और इस तरह जो है ना ए टू डी में सी आता है सेंटर में, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, ए और बी में क्यों नहीं आता, आप बताएं कैसे आपने क्या है ए और सर बी ये से? हम डायरेक्ट इसका सर डायरेक्ट कनेक्शन बना नहीं सकते ए टू बी का इधर, मतलब अगर नहीं, आपका जो नेटवर्क है इसमें तो नहीं है ना। ये आप समझे कि ये शहर है, उनके बीच में ये रास्ते हैं। ठीक है, अब आप कहीं जाने के लिए खुद अपनी रोड नई तो नहीं बनाते ना, अपने जहां से रोड है वहीं से जाना होता है। सॉरी सर, माय मिस्टेक। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी अटेम्प्ट है आपने, बिल्कुल सही किया है पूरा, बाकी चीजें सही है। लेकिन इसमें ये देखें, आपको इस एक्सरसाइज से आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हुआ है कि आप ए टू बी में जाने के लिए आपको सी से गुजर के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे बाय रोड आप जा रहे हैं कराची से इस्लामाबाद, ठीक है, और वो रोड पहले आपको लाहौर लेके जाती है, ठीक है, डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल। फिर आपको वहीं से जाना पड़ेगा। अलबत्ता अगर आप जैसे डी से ई पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप सी पे जाएं, आप डायरेक्ट डी से ई पे जा सकते हैं। ठीक है, सही। तो इसलिए जो आपका कॉलम में आपने 0 लिखा है वो बिल्कुल सही है डी और ई के सामने, और डी और एफ के सामने भी जो 0 लिखा है वो भी बिल्कुल सही है आपने लिखा है। और ई टू एफ में भी जाने के लिए आपको सी पे नहीं जाने की जरूरत, बल्कि ई से डी पे आएंगे, डी से एफ पे चले जाएंगे। ठीक है, बस सी पे नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो बाकी आपका सही है बिल्कुल। Excellent. Thank you very much for sharing this. This is great example. Anyone else?
who would like to share their work with the class? अब सही है? जी अब सही पेपर आपको नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, go ahead. तो आपने जो नेटवर्क बनाया है इसमें आप अब किस चीज की सेंट्रलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन से नोड की? नोड बी। नोड बी की, अच्छा ग्रेट। तो ए से ई में जाने के लिए एक शॉर्टेस्ट रास्ता है और उस पे बी लाई नहीं करता, बिल्कुल सही। और ए से सी में आने के लिए दो रास्ते हैं जिन पे एक पे बी लाई करता है, बिल्कुल सही। और ए से डी में जाने के लिए एक रास्ता है और बी उस पर लाई नहीं करता। इसी तरह से ए से ई, ए टू ई आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, ऊपर दोबारा कैलकुलेट करें आप ए टू ई। तो एक दफा किया ऊपर तो नहीं किया हुआ, अच्छा बी किया हुआ। ओ ए टू बी है ये, ठीक है सॉरी। ए टू बी, ए टू सी, ए और आप बी का कैलकुलेट कर रहे हैं ना? बी फॉर बॉय, राइट? यस। तो अगर आप बी की कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीननेस, तो फिर ये जो पाथ है ना ए टू बी, ये आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका नहीं किया हाँ इसमें नहीं करेंगे जी, उस वजह से क्रॉस कर दिया था आपने, ठीक है। तो ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, और फिर इसी तरह बी टू सी को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि आप बी की कैलकुलेट कर रहे हैं। बी टू डी जो है वो दो हैं, और नहीं बी टू डी वाला भी आप इग्नोर करेंगे, बी टू ई वाला भी इग्नोर करेंगे क्योंकि बी से कोई भी रास्ता शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। सी टू डी कंसीडर किया मैंने, सी टू डी, सी टू डी सही है। सी टू डी जो है एक रास्ता है, उसमें बी लाइनिंग करता, सही है। और सी टू ई जो है वो दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस हैं जिसमें एक पे बी लाई करता है, बिल्कुल सही। और आखिरी वाला जो है वो क्या लिखा आपने, लास्ट वाला? सी टू ई है और क्या? डी टू ई, डी टू ई, बिल्कुल डी टू ई एक रास्ता है और उसमें बी लाई नहीं करता, एक्सलेंट। तो टोटल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस हैं आपके पास वो 6 आए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुझे तो 8 लग रहे हैं, आपने 6 कैसे कैलकुलेट किए? नहीं देखिए, ए टू सी के दो है ना, दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो दो आप जमा कर लें। फिर ए टू डी में एक और है तो वो 3 हो जाएंगे। फिर ए टू ई एक और है वो 4 हो जाएंगे। फिर सी टू डी एक और है तो वो 5 हो जाएंगे। सी टू ई 2 हैं तो वो 7 हो जाएंगे। और डी टू एक और है तो वो 8 हो जाएंगे। तो 8 पॉसिबल आएंगे आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और उनमें से फिर आप ये कैलकुलेट करेंगे कि बी कितनों पे लाई करता है। तो बी जो है वो आपने मुझे बताया 1 और 2 पे सिर्फ लाई करता है, तो 2/8 आएगा इसका आंसर। ओके सर, ठीक है, एक्सीलेंट वर्क, बिल्कुल आपका भी बहुत अच्छा काम था और आपके भी कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो गए। एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच तुला जी। तो हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं और अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपके भी कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे जी। एनीवन एल्स इन द क्लास जो कि शेयर करना चाहें अपना काम? अंजलि, आप शेयर करना चाहेंगी? Sir, I have done it on my notebook and right now I'm connected on my laptop, so I will add the picture on Wiki if that's all right. जी जी बिल्कुल सही है। As a matter of fact, आप जिसने भी काम किया है, they should do this. They should upload their picture of their work अगर आपने नोटबुक पे किया है, और अगर आपने कंप्यूटर पे किया है फॉर एग्जांपल तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने पेपर पे किया है तो you can take a picture through your mobile phone and upload it on your wiki ताकि हमें पता चले कि आपने किया है। और उसमें अगर मुझे कोई फीडबैक देनी हुई आपको तो वो भी मेरे पास फिर अपॉर्चुनिटी होगी टू प्रोवाइड यू विद सम फीडबैक, ठीक है। So that's excellent. Thank you very much everyone for participating in today's session, or especially those who shared their work with us today. उससे पूरी क्लास का भी फायदा हुआ। Excellent. Thank you everyone. That's all for today. Thank you very much.